Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी मैट्रिक्स उपरे बेसिक आइडिया तुमर थी स्कूल टाइम रू सो फास्ट देखा आम गोटे मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज केमती बाहर करा जाए सपोज गोटे आम मैट्रिक्स नेला जार ऑर्डर होची m क्रॉस n ओके now if we interchange its rows and columns then we will obtain another matrix of order now n cross m such a matrix will be called as the transpose so original matrix जोटा m cross n रथिला जदि a ताले तार ट्रांसपोज को आम डिनोट करिबा बाय सिंबल a डैश और a tilde और a superscript t ओके सो एटी मैट्रिक्स देखो सपोज a equal to a11 a12 up to a1n a21 22 up to 2n similarly up to am1 am2 up to amn now we interchange the rows and columns so a tilde by यार जो ट्रांसपोज by a prime it is given by a11 a21 am1 a12 a22 up to am2 and lastly a1n a21 up to amn okay so it is a general format suppose गोटे आम एग्जांपल नेबा let us take our matrix to be 1 2 3 4 5 6 ए हिसाब रे अछि so let us interchange the rows and column we are getting the transpose matrix like this okay 1 4 2 5 3 6 right so it is obvious that ith jth element जोटा अछि okay of the original matrix A will be interchange that is it will become jith element of the transpose matrix okay ijth element जोटा थिला jith element हे गला that is if A equal to aij having order m cross n then the transpose will be aji having order n cross m some of the basic properties of transpose of a matrix are given here okay transpose of a transpose दुई थर जदि करबा we will get the same original matrix then जदि गोटे आमे स्केलर सहित मल्टीप्लाई करबा and we take transpose ताले भी किछि भी इफेक्ट हेबोनी it is given by lambda into the transpose matrix the scalar may be real or complex right तापरे a plus b रो ट्रांसपोज करले एटा easily distribute हो जिवो okay okay so एटा हला it is being the conformable for addition okay तापरे a b जदि मल्टीप्लिकेशन करबा ताले टिके अलगा हबो एठी उल्टी जिवो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज okay it is being the conformable for multiplication यार प्रूफ भी अछि से पार्ट को हमें जीवानी okay तापरे second one is the conjugate of a matrix so original matrix जदि हला हमर a any matrix having complex numbers then the matrix which is obtained from the original matrix A by replacing its each element by its conjugate complex number will be called as the conjugate of the matrix A okay so it is denoted by A bar or A star okay thus if A is given by the matrix aij then A star will be equal to aij star okay aij star माने एटा complex conjugate को बुझाउची okay so for example मन रखो एठी complex number निहाती रहिबा कथा okay so otherwise जदि complex number नाही ताले किछि भी फरक पड़िबोनी the conjugate matrix will be equal to the original matrix so एटा हमरो मूल matrix टा हला 1 plus 2i 2i 3 5i 2 minus 3i so if we take the complex conjugate then I टा minus I ही जिवो so 1 minus 2i 2 minus I 3 minus 5i 2 plus 3i okay now let us see
some of the basic properties of conjugate matrix. যদি a star b star দুইটা conjugate matrix ହେଲା of the original matrix a and b, তাহলে double conjugate କରିବା ଯଦି a star star will be equal to the original matrix, जोटा आमे transpose रे भी एमती देखुथिला. तापरे यदि प्लस करछु दुईटा मैट्रिक्स रो, तापरे तार यार conjugate जदि बाहर करछु, it is equivalent to a star plus b star being conformable. Then scalar multiplication रे भी एटा देखो, जदि हमर स्केलर टा कॉम्प्लेक्स नंबर अछि लैम्बडा a star, ताले लैम्बडा स्टार a star हबो. ओके, तापरे मल्टीप्लिकेशन जदि करछु a b star, ताले एठी इंटरचेंज होउनी, a star b star आछि being conformable for multiplication, right? तापरे conjugate transpose. conjugate transpose माने कोन देखो, conjugate of the transpose of a matrix कहले आमे याको बुझिबा called as the conjugate transpose of the original matrix A, and it is denoted by symbol A dagger. Okay, that means A dagger will be equal to, first आमे यारो transpose बाहर करिबा, तापरे यारो conjugate बाहर करिबा, so AT star. Okay, so it is obvious that the conjugate of the transpose of a matrix is the same as the transpose of the conjugate of a matrix. Okay, same जिनस आगो जदि ट्रांसपोज न करी कि आगो जदि आमे conjugate बाहर करिबा तापरे ट्रांसपोज बाहर करले भी एका कथा सेम. So mathematically it can be written as जदि हला हमर original matrix aij m cross n, then its conjugate transpose, that is a dagger, will be equal to aij n cross m. Okay, so एठी आई थिंक मते लागुची गोटे प्रिंटिंग मिस्टेक अछि, ए आई जे एटा हबो तापरे एठी स्टार बसिबा कथा. ओके, एटा आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक अछि, आई विल रेक्टिफाई इट. सो फॉर एग्जांपल जदि हला हमर मैट्रिक्स एठी ए, ताले यार conjugate transpose, that is a dagger हि जिवो. देखो रोज टा कॉलम, कॉलम टा रोज, तापरे आई टा माइनस आई. ओके, ए हिसाब रे देखो ए सब लिखा हिची. ओके, नाउ सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate transpose or transposed conjugate of a matrix are like, यदि a dagger b dagger हेगला, two transposed conjugates of the original matrix A and B respectively, then यदि हमें double नौचु यार conjugate transpose माने a dagger dagger will get again the original matrix, plus करिले यार distribute ही जाउची conformable for addition. scalar multiplication यदि करछु with a complex number, then एटा आसीबो lambda star a dagger. then multiplication a plus b रो होल हमें conjugate transpose करले एटा उल्टी जाउची, देखो b dagger a dagger conformable for multiplication, right? तापरे at the end we will see the adjoint of a matrix. Okay, adjoint is very important in order to calculate the inverse of a matrix, जोटा हमें next upcoming class रे पढ़िबा. so adjoint माने केमती करिबा, suppose original matrix हला हमर a equal to aij, and it is a square matrix, number of rows number of columns saman rahibo. let us say b is another matrix bij. okay, again n square matrix. okay, so bij is a cofactor of aij in the determinant a, then b is called as the adjoint of a and is denoted by adjoint a. okay, in other words, adjoint of a matrix is defined as the transpose of the matrix which is formed by the cofactors of the elements of the determinant of that matrix. okay, याको mathematically एबे बुझिबा. suppose हमरो original matrix हला a equal to like this, a11 up to a1n, a21 to 2n dot dot dot, then an1 to ann. ताले एबे आमे सबु एलिमेंट पाई कोफैक्टर बाहर करिबा. कोफैक्टर केमती बाहर करिबा, एई मैट्रिक्स को फर्स्ट आमे डिटरमिनेंट रे लिखि देबा. सपोज फर्स्ट एलिमेंट a11, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. जेमती डिटरमिनेंट को सॉल्व करू से हिसाब रे मझी रे जो एलिमेंट रहिला ताको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करला परे वी विल गेट द कोफैक्टर फॉर दिस एलिमेंट. so similarly for each and every element we will get the respective cofactors. सबु जेते cofactor को suppose हमें capital letter रे denote कला, that means a11 रो cofactor को कहला हमें capital A11. ताले सबु cofactor को हमें यदि matrix रे लिखिबा, ओके, ये determinant रो सबु cofactor को हमें matrix रे लिखिला यदि we get a matrix like this. now
we take the transpose of this matrix in order to get our adjoint, which is this much. Okay, example le solve kole better tome yaku buझी परिबो. Let us see some of the important property of adjoint and its matrix. যদি গোটে matrix আমি নেଉଛୁ which is n square, তাহলে adjoint a into a is equal to a into adjoint a, which is nothing but equal to the determinant a into the identity matrix of order n. Okay, তা মানে এটা দেখো ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଠି এটা commutative law କୁ follow କରୁଛି and their product is a scalar matrix having every diagonal element of which is nothing but your determinant a. Okay, यार proof part भी ଦେଇଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ skip କରୁଛି. ଏଥିରୁ ଗୋଟେ corollary ବି ବାହାରୁଛି. Okay, ଯଦି ଆମର determinant ଟା non zero ଆସୁଛି, okay, non zero ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ 1 by determinant into adjoint a याकू bracket रे रखिबा into the matrix a will be your unit matrix or identity matrix. Okay, so ଏଠି ଆମର जो bracket रे quantity अछि, this is nothing but the inverse of the matrix जोटा हमें upcoming classes रे detail पढ़िबा. Let us solve a problem related to adjoint of a matrix. So देखो we are taking a matrix 1 2 3 5 0 4 2 6 7. ताले first हमें याको determinant जदि हिसाब रे लिखिला ताले respective co-factors बाहर करिबा for each element. Suppose first row को हमें नेला consider कला. Okay, first row रो first element हला एठी 1. Okay, so it is lying in the first row and first column. ताले जो co-factor बाहर करिबा सेटा एई जो मझिरे रहउची यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हबो देखो. Okay, 0 4 6 7 आ एटा -1 to the power एटा रो नंबर कॉलम नंबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, तापरे नेक्स्ट हैला सेकंड एलिमेंट जोटा होची 2 lying in the first row second column, ताले 5 4 2 7 लिखिला, then -1 to the power first row second column, so 1 plus 2. Okay, in this way we are getting the respective cofactors of the first row as -24 -27 and 30. Similarly, we can determine the cofactors of the other two rows, that is the second one and the third one. Okay, which is coming out to be 4 1 -2 8 11 -10. এটা চেক করিব. ওকে, তাহলে जो मैट्रिक्स आमर थिला मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट. ओके, फर्स्ट आम यार डिटरमिनेंट लिखिला, तापरे कोफैक्टर गुडार मैट्रिक्स को एई भलिया आमे पाइगला. देन वी टेक द ट्रांसपोज माने रो को कॉलम करिबा कॉलम को रो करिबा, so that we are getting the adjoint of A to be equal to this much. Okay, so this is all about the transpose, conjugate and adjoint of a matrix. Thank you.